Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are fine and staying safe and happy. I am your GK teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your GK class. My dear students, as you know that we have started unit number 5, Allama Muhammad Iqbal, Rahmatullah Alayh, and today I will deliver its first lecture. So my dear students, let's start the lecture with an activity. अब मैं आपको एक दुआ सुनवाऊंगी, एक पोएम सुनवाऊंगी, आपको इसे गौर से सुनना है, and you have to tell me that have you listened to it before? Listen to it carefully. So, आप लोगों ने पोएम सुनी and now tell me, have you heard this दुआ? Basically ये एक दुआ है, ये कोई नज़म नहीं है, ये एक दुआ है क्योंकि इसमें बार बार कहा रहा है, क्या कहा जा रहा है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी. So ये एक दुआ है. तो आपको पता है कि कभी आपने ये सुनी है पहले? सुनी होगी, डेफिनेटली सुनी होगी, अक्सर स्कूल में भी इसको रिसाइट किया जाता है. So ये दुआ जो है ये अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो है ये लिखी थी. So after the study of this unit, students will be able to आज का लेक्चर ख़त्म होने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे that they will introduce Allama Iqbal as personality who expounded the idea of Pakistan, narrate the major events in the life of Allama Iqbal, date of birth, national poet, famous poems for children and the date when he died. So my dear students, क्योंकि अभी मैंने आपको अल्लामा इकबाल की लिखी हुई एक दुआ जो है वो सुनवाई है जो कि बच्चे बड़े शौक से पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ी जाती है. अक्सर कौमी जब इवेंट्स, नेशनल इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर भी इसको रिसाइट किया जाता है. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत खूबसूरत सी दुआ अल्लामा इकबाल ने लिखी थी. अल्लामा इकबाल कौन थे? ये एक लीडर थे. इनका मुकम्मल जो इंट्रोडक्शन है वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. So before that, let's quickly look at the Islamic perspective. And we made them leaders guiding by our command. And we inspired to them the doing of good deeds, establishment of prayer and giving of zakat. And they were worshippers of us. So my dear students, जो अजीम leaders होते हैं वो अल्लाह ताला के बताए हुए अहकामात पर चलते हैं, नमाज कायम करते हैं, ज़कात का हुक्म देते हैं कि ज़कात कायम करो. इसके अलावा वो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं. सो हमारे तमाम जो लीडर्स हैं, दे आर ग्रेट लीडर्स. कायदे आज़म अल्लामा इकबाल ये हमारे बहुत ही अजीम लीडर हैं जिन्होंने इस्लाम की बुनियाद पर अल्लाह के नाम पर हमें एक आज़ाद रियासत जो है वो दिलवाई. सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स द प्री रीडिंग क्वेश्चन. हु इज़ अल्लामा इकबाल? डू यू नो दैट? हमने अभी उनकी पोएम पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मैं उनका नाम ले रही हूँ, एक पूरा यूनिट उनके बारे में बना हुआ है. तो क्या आपने सोचा अभी तक कि अल्लामा इकबाल कौन थे? वेरी गुड. ही वॉज अ पोएट एंड ही इज द नेशनल पोएट ऑफ पाकिस्तान. वो पाकिस्तान के कौमी शायर भी हैं और कौमी शायर होने के अलावा उनको ये तमाम जो इम्पोर्टेंस है ये क्यों दी जाती है, वी विल स्टडी अबाउट दैट. सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द स्टोरी ऑफ अल्लामा इकबाल. So my dear students, Allama Iqbal was born on 9th November 1877. His father's name was Sheikh Noor Muhammad. His mother was Imam Bibi, and his region, his area of expertise was Islamic philosophy. और उन्होंने इस्लामिक लॉ के अंदर जो है वो एक डिग्री ली थी. एंड ऑन 21st April 1938 at the age of 60 he died. So before Pakistan came into being, Allama Iqbal जो है उनकी डेथ हो गई थी. So this was a brief introduction of Allama Iqbal. He is known as Shair Mashriq and Hakimul Ummat also. So this is his tomb. ये उनका मज़ार है जो कि बादशाही मस्जिद लाहौर के पास वाक़ है और लाहौर में है ये. एजुकेशन की अगर उनकी बात की जाए तो उन्होंने
उनकी जो अर्ली का एजुकेशन है वो मरे कॉलेज सियालकोट से उन्होंने हासिल की. इसके अलावा ही डिड हिज मास्टर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर एंड फॉर पीएचडी अपने डॉक्टरेट के लिए वो लडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिच जर्मनी जो है वो गए थे एंड फ्रॉम देयर ही डिड हिज पीएचडी. So my dear students, now Allama Iqbal was a great leader of Muslims. He was the founder of two nation theory. इनको इसलिए इतनी importance हासिल है क्योंकि इन्होंने दो कौमी नज़रिया दिया था. असल में ये जो बेस थी कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग नेशंस हैं, ये अल्लामा इकबाल की ही दी गई सोच थी और इस सोच को टू नेशन थ्योरी का नाम दिया गया. ही गेव द विजन ऑफ पाकिस्तान. उन्होंने एक आज़ाद मुल्क यानी कि पाकिस्तान का जो है वो नज़रिया दिया था. हिज सर्विस इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान सर्विसेज इन द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान आर अनफॉरगेटेबल. सो जो भी उनकी सर्विसेज हैं जो उन्होंने पाकिस्तान को बनाने के लिए पेश की थी वो नहीं भुलाई जा सकती. इवन आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ पाकिस्तान बन चुका है एंड ही हैज़ डाइड, इट्स बिन सो लॉन्ग, लेकिन हम फिर भी उनको याद करते हैं उनकी नज़मों के ज़रिए, उनके गीतों के ज़रिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ ओपन यूनिट नंबर 5 एंड अर्ली लाइफ ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल. I hope everybody has opened the page. Now let's start the reading. Early life. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayh is the national poet of Pakistan. He was born on 9th November 1877. He got his early education in Sialkot. He did his masters from Government College Lahore. He went to Germany for higher studies. So this was about his early life, as I have already told you. So the poet of East, यानी कि उनको शायर मशरिक कहा जाता है. Allama Muhammad Iqbal Rahmatullah Alayh is known as the thinker of the Pakistan. He gave the idea of a separate homeland for the Muslims of the subcontinent. In his famous address of Allahabad 1930, he said Muslims are a separate nation and their rights have to be secured. He further added that the people in the subcontinent belong to different religions, cultures, and languages. I would like to see Punjab, NWFP, currently Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, and Balochistan as single state for Muslims. So my dear students, basically अल्लामा इकबाल का नज़रिया ये था क्योंकि उन्होंने सोच उजागर की थी कि पाकिस्तान यानी कि एक मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए. हिंदू और मुसलमान दो अलग कौमें हैं. मुसलमानों को रहने के लिए एक आज़ाद जगह चाहिए जहाँ पर वो अपनी मर्ज़ी की तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें, अपने मज़हब के ऊपर चल सकें. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए उन्होंने इलाहाबाद के जलसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया था और उन्होंने ये कहा था कि मुसलमान और हिंदू दो अलग कौमें हैं, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क होना चाहिए. और फिर उन्होंने ये नज़रिया भी दिया था कि सब कॉन्टिनेंट में यानी कि बर्रे सगीर में जिन इलाकों में मुसलमान जो हैं वो अक्सरियत में हैं यानी कि ज़्यादा हैं, उन इलाकों को अलग करके पाकिस्तान या एक अलहदा रियासत जो है वो बना दी जाए. So my dear students, this was his thinking that he presented first time in the history. So then he is also known as Shair Mashriq, the poet of East. He awakened the Muslims through his poetry. He wrote many poems. He died on 21st April 1938. His tomb is located in Lahore. His famous poems are Ek Parinda or Jugnu, Subha Ka Sitara, Ek Pahad or Gulehri, एक मकड़ा और मक्खी. सो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट राइटिंग्स एंड पोएम्स ऑफ अल्लामा मोहम्मद इकबाल. उन्होंने अपनी नज़मों के ज़रिए मुसलमानों के अंदर जोश और बलबला पैदा किया और उन्हें ये बताया कि वो एक खुददार और आज़ाद कौम है और उन्हें आज़ादी के साथ ही रहना चाहिए. सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लामा इकबाल इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड इम्पॉर्टेंट लीडर फॉर मुस्लिम्स एंड फॉर गेटिंग पाकिस्तान. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये अल्लामा इकबाल की जो कुछ नज़में हैं ये उनके नेम्स आपको नज़र आ रहे हैं. सुबह का सितारा, पहाड़ और गुलहरी, इसके अलावा एक मकड़ा और मक्खी. Okay, my dear students, now is the time for practice. For practice, you can download this worksheet from the description box below this video, or you can get it in print form by your teacher. So my dear students, write 5 lines on Allama Iqbal. आपने उनकी early life के बारे में पढ़ा. Write his date of birth, when he died, about his early education, where he was born, and what is he called,
शायर मशरिक, थिंकर ऑफ द नेशन. सो आप ये तमाम चीज़ें जो हैं इन पॉइंट्स को यहाँ पर लिख सकते हैं. देन फिल द एजुकेशनल साइकिल ऑफ अल्लामा इकबाल. मैंने आपको अल्लामा इकबाल की एजुकेशन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी. सो यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स. यू कैन री वॉच द वीडियो फॉर द इन्फॉर्मेशन. So complete the paragraph with the help of the words in box given below. So here are some word bank. There's a word bank given, and here are some fill in the blanks. So with the help of these blanks, fill in them. Allama Iqbal is known as the thinker of nation. He gave the idea of a separate nation for the Muslims of the subcontinent. His famous address of Allahabad, he said Muslims are a separate nation and their rights have to be secured. He further added that the people in the subcontinent belong to different languages, cultures, and religions. I would like to see Punjab and WFP, currently Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Balochistan, as homeland for Muslims. So, my dear students, ये जो है वो उनका कुछ उनके बारे में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी. आप बुक की हेल्प से भी इसको कंप्लीट कर सकते हैं. वर्ड बैंक आपको ऑलरेडी दिया है. पॉज द वीडियो एंड कंप्लीट इट. I hope everybody has finished it. Now we will move forward. So now you will do analysis and interpretation. So you will do these MCQs 1, 2, 3, and 4 in your books. I hope everybody has finished it. Now we will move forward towards evaluation. So quickly tell me, when did Allama Iqbal was born? Very good. What title was given to him? Poet of East, Shair Mashriq. Why is he called Poet of East? Because he made the Muslims of the subcontinent realize through his poetry that they are a separate nation. Name some poems of Allama Iqbal. Very good. Who gave the idea of Pakistan? Allama Muhammad Iqbal. When did Allama Iqbal die? Very good. Where is the tomb of Allama Iqbal? Excellent. So my dear students, now you know a lot of things about Allama Muhammad Iqbal. So now quickly note down your homework. For homework, in which language Allama Iqbal did poetry? Allama Iqbal ने किन किन ज़बानों में poetry की? You have to search that and search any poem of Allama Iqbal and recite it in your class. और Allama Iqbal की कोई भी poem आप search करें और उसको class में अपनी पढ़ें. So this is your homework, and next is find out more about the education of Allama Iqbal. Also write the name of the very first poem of Allama Iqbal. So Allama Iqbal की poems के बारे में search करें, उनकी एजुकेशन के बारे में सर्च करें और ये भी बताएं कि उन्होंने पहली नज़म कौन सी लिखी थी. सो दिस इज़ योर रिसर्च वर्क फॉर योर होम एंड वी विल मूव फॉरवर्ड फ्रॉम हेयर. सो नाउ इज़ द टाइम फॉर सम अप. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन टुडेज लेक्चर वी हैव लर्नड दैट Allama Iqbal was well-educated national poet and thinker of Pakistan. He said Muslims are a separate nation and their rights have been secured. He is also known as Shair Mashriq and wrote many poems. So my dear students, this was all about Allama Iqbal, his introduction, his early life and his contributions. I hope you have enjoyed today's lecture. In the next lecture, students will learn about the famous poem Makra and Makhi. So Makra और Makhi जो है कायदे आज़म की एक बहुत मशहूर पोएम है. ये बच्चों के लिए बहुत important है. So we will discuss it in the next lecture. Until then, keep everybody around you safe. Have a good day. Thank you so much and Allah Hafiz.